चलो बेटा, पहला क्वेश्चन है, डिस्कस ग्रामसी नोशन ऑफ ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल का नोशन के बारे में लिखना है, वी हैव टू। एंड सिग्निफिकेंस वही है, इसको हेजेमोनी वाले डायमेंशन से आपको कनेक्ट करना है, और जो उसके चीफ कंसर्न थे उससे लिंक करके वी हैव टू कंक्लूड दिस। Gramsci gave his concept of hegemony in his book The Prison Notebook. The concept of organic intellectual was an important part of it. ठीक है, सिंपल ही बात है ये तो। As per Gramsci, hegemony by capitalists is gained through both consent and coercion. While consent serves as a first layer of defense, coercion is only used when the consent is failed. Hegemonic class manufactures consent by help of their organic intellectual. A set of professionals who belong to the class are responsible for separating their ideas with the use of institutions like school politics. ठीक है, ओके, डायग्राम भी ठीक लिखी दी आपने। Gramsci says that oppressed class must wage protected protracted warfare with the help of organic intellectual. A counter hegemony must be built to sustain support. War of position only after a war of maneuver can be fought. ठीक है। Chantal Moffat praises Gramsci theory as second to Marx himself. However, Joseph V. Femina notes wars of maneuver cannot happen in democratic society. ठीक है भाई। Despite the criticism, Gramsci's notion of organic intellectual helps to understand way of securing and challenging hegemony. The notion is exemplified by organic leaders like Ambedkar, who fought for Dalit rights. Okay, this is good conclusion. अच्छा है आंसर आपका। डिस्कस कार्ल मार्क्स नोशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास। क्लास का कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, सिंपल ओपन एंडेड क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास इज at a core of his theory of historical materialism. For Marx, class was both an economic category and a determinant of social relation. ठीक है। Okay. In the book Communist Manifesto, Marx and Hegel assert history of all hitherto existing societies, history of class struggle. Good. Tracing class struggle from master slave to bourgeois and proletariat in capitalist society. Capitalist society, it start from the uh, primitive society, then master slave रिलेशनशिप होती है, उसके बाद में सेकंड हैपेंस फ्यूडल लॉर्ड एंड सर्फ, देन द बुर्जा प्रोलिटेरिएट। ऐसे हिस्ट्री इज मूविंग इन दैट डायरेक्शन एंड क्लास प्लेज रोल। क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्लास कॉन्फ्लिक्ट की डायमेंशन ही आपको रिफ्लेक्ट करनी है। दिस लाइक द मेन रीजन फॉर क्लास स्ट्रगल एज पर मार्क्स इज द नॉन शेयरिंग ऑफ सरप्लस वैल्यू। ओके, ये अभी आया है, मतलब इन दिस वूज एंड प्रोलेटरिएट के अंदर। उससे पहले इट्स लाइक क्लास एक्सप्लोटेशन इज द प्रोमिनेंट डायमेंशन। क्लास एक्सप्लोटेशन, ये एक हैव नोट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं हैव, सो वो डायमेंशन है। सो नॉन शेयरिंग ऑफ सरप्लस वैल्यू का दो डायमेंशन, वो तो इसने यहाँ पे दिया है बुर्जुआ एंड प्रोलेटरिएट के अंदर, कैपिटलिज्म के अंदर, कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर। बट ऑल्दो the point is right. To end the class struggle, Marx calls workers to unite. He urges them to change from class in itself objective position to a class for itself conscious political action. ठीक है। Excessive exploitation, alienation, and dehumanization of labor is labor in capitalism drives this transformation of labor class. Marx also predicted the rise of an intermediary class consisting of petty bourgeois. His ultimate aim was to end class antagonism from a class and form a classless society. Okay. Critics argue that Marx's classless society would result in absolute anarchy. Additionally, Popper asserted that Marx's theory of class struggle is non-scientific as it is not open for falsification. हाँ, falsification वाला dimension हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं
that after reaching to one point the history ends, end of history जो आ गया ना. So here that is not open for falsification. जो हीगल का कॉन्सेप्ट है डायलेक्टिक्स का जिसको ये यूज कर रहे हैं, which reflect this class antagonism. Okay, class antagonism, ये दो अपोजिट फोर्सेस हैं. एंड दिस इज हाउ, जब स्लेव्स स्लेव वाली सोसाइटी के स्लेव जब हटे, सो न्यू सोसाइटी डेवलप हुई जिसके अंदर अब स्लेव नहीं थे. नाउ दे टर्न इनटू सर्फ and they were more or less slave only, but their shape changed. Okay, लेकिन class antagonism था ही. So now he is saying that after reaching where you are saying that now we have established classless society, अब क्या? So in communism you don't have any kind of more contradiction. इसी को बोल रहे कि is it not open for falsification? So इस डायमेंशन में ये यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं. मार्क्स व्यू ऑफ लेबर क्लास एक्सप्लोटेशन रिमेन रिलेवेंट इन द 20th सेंचुरी कैपिटलिस्ट सोसाइटी. ओके, लिख सकते हो मॉडर्न टाइम में लाइक हाउ द नंबर ऑफ आवर्स आर बीइंग इम्पोज्ड ऑन इन कॉर्पोरेट वर्क कल्चर. वो डायमेंशन भी आप लगा सकते हो. आई शेयर्ड वन आर्टिकल इन टेलीग्राम ऑल्सो रिलेटेड टू दैट which can be used in this particular question. कितने मार्क्स का क्वेश्चन था ये? ओके. Explain Marx's understanding of human essence and alienation. Marx gave his concept of alienation in his book Philosophical and Economic Manuscript, जिसको पेरिस में स्क्रिप्ट भी बोलते हैं. द राइटिंग प्रोवाइड्स ए प्रोफाउंड क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म. फॉर मार्क्स ह्यूमन एसेंस लाइज इन एन इंडिविजुअल्स कैपेसिटी फॉर कॉन्शियस, creative and social labor. All work is done with ultimate aim of collective social flourishing. Unlike animals, men have intellect to engage, reason, reflect. Work must serve as a means of self-realization. Okay. Self-fulfillment, self-realization. However, due to the capitalism, men works lead to alienation of labor, process of labor, self and others. Others means society. So different level के alienation होंगे. You have to write that. Man's alienation from the product is caused due to its external control. हाँ, estrangement. बना रहा है प्रोडक्ट बट देखो मतलब वो सिस्टम क्या है कैपिटलिज्म के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, कि उस प्रोडक्ट को आप यू कैनॉट क्लेम दैट आई मेड दिस थिंग. एक कार बना रहे हो आप, आपने उसका सिर्फ स्टीयरिंग बनाया, कोई उसका वो बना रहा है, टायर बना रहा है, किसी ने उसका गियर बॉक्स बनाया. सो लाइक यू नो यू आर एलिनेटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट. ये उस एसेंस में बोल रहा है कि यू कैनॉट क्लेम कि यार ये मैंने ही क्रिएट किया है. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज ट्राइंग टू से कि ऐसा सिस्टम ही है, फैक्ट्री सिस्टम ही ऐसा है. if a poet claims that I wrote this poem, so you are claiming that this is my creation. उस सेंस में बोला. थोड़ा डीपली फिलोसफिकली इज सेइंग. फॉर एग्जाम्पल वन पेंटर सेज दैट दिस इज द पेंटिंग आई मेड. तो उस सेंस में बोल रहा है कि यू आर बीइंग एलिनेटेड फ्रॉम द दैट एंड प्रोडक्ट. उस सेंस में बोल रहा है ये. देयर इज ए लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ कम्युनिटी बिलोंग टू द कैपिटलिस्ट. हाँ, ये भी कह सकते हो. दिस इज accompanied by alienation of process of labor as the work is forced, repetitive and the work is detached from the final output. This is the good point. This is what I was talking about. Worker also experiences alienation from the fellow men as capitalist society is competitive, exploitative, ruthless. There is no time for personal relations. एक नॉवल पढ़ा था मैंने, द मदर करके है, रशियन राइटर हैं मैक्सिम गोर्की का वो नॉवल है. उसमें यही है, उसका एसेंस यही है दैट वर्कर्स दे आर गोइंग आफ्टर वर्क एंड दे जस्ट गो, देन दे ड्रिंक इन सम बार, दारू पीते हैं, सो जाते हैं, अगेन इन द मॉर्निंग बेल रिंग्स एंड दे गो. सो दे आर टोटली एलिनेटेड फ्रॉम देयर ओन सेल्फ, द टाइम दे मस्ट स्पेंड विद देयर फैमिली, विद देमसेल्फ. तो इसको बोले एलिनेशन. आप सिर्फ
फैक्ट्री में झोंक दिया गया है आपको, आप जानवर की तरह काम कर रहे हो. सो दिस इज द एसेंस ऑफ दैट. Most importantly, workers experience alienation from self. There is a loss of creativity and freedom. Very good. ठीक है. Marx also gives concept of product ethicism, where exchange values of community overtakes actually use value. This add to the alienation of individual. Marx said that there is a need for de-alienation in his book German Ideology. He gives the ideal manual labor, hunt in the morning, fish in the afternoon, rear cattle in the evening and critique after dinner. ये होगा जब हम कम्युनिज्म को इस्टेब्लिश कर लेंगे, कम्युनिस्ट सोसाइटी जब होगी. फाइन. ओके, दिस वाज द गुड क्वेश्चन, गुड आंसर. According to Gramsci, hegemony is based on organization of consent command. Gramsci gave his concept of hegemony in his book Prison Notebook, written in this while he was imprisoned by Benito Mussolini fascist regime. ठीक है. This is good. You are mentioning the books, like their work. That's a good. It's gives some kind of credibility to your answer. ये अच्छा है. I appreciate that. According to Gramsci, the capitalist class maintains its domination by combination of consent and coercion. He moved beyond Marx's account of dominance of capital class due to their control on economy. Economic determinism से he is just reflecting the essence of सुपर स्ट्रक्चर को इग्नोर किया था मार्क्स ने. सुपर स्ट्रक्चर के रोल को यहाँ पे ये फोकस कर रहा है उसके ऊपर. Gramsci notes that ruling class manufacture consent of governed via civil society. Institution of search, social search, school and politics are used to make values of ruling class as common sense. Okay. लिखो यहाँ पे ये इकोनॉमिक बेस है, बट ऑल्सो सुपर स्ट्रक्चर ऑल्सो प्लेज द रोल. ये दोनों डायमेंशन बताओ आप यहाँ पे. Gramsci notes that the hegemony is so strong that the worker does not despise the system. He only dislikes the fact that he is not a capitalist. To gain the consent of governed, Gramsci asserts that the labor class should form a counter hegemony. He gives the notion of organic intellectual to form consent by the use of integral state medium and church. Is in the organization of consent. कंसेंट की डायमेंशन लेके आए यहाँ पे आप. Gramsci notes that direct revolution is not possible in capitalist state due to the strong hold of civil society. The culture of ruling class appears natural. He suggests protracted warfare. First, a war of position, a gradual struggle to build its own institution and culture only after a war of maneuver. Military टर्मिनोलॉजी यूज किया था इसने इस डायमेंशन के लिए. Chattel Moffat praises Gramsci as next to Marx himself for his massive contribution to Marxist paradigm, while Joseph Femina criticizes his concept of war of maneuver as the impossible. Okay. यहाँ पे इसको इस डायमेंशन को आप ये भी लिखो that it is being used in international relations. His theory of hegemony वहाँ पे भी यूज़ किया गया है. यू राइट दैट. और वो थिंकर थे जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट का जो डायमेंशन दिया था. व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट थिंकर? दिमाग में घूम रहा है, कुडंट रिकॉल. यू सर्च ऑन इंटरनेट, मिल जाएगा आपको. मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट का दिया था. दैट कैपिटल क्लास दे मैन्युफैक्चर द कंसेंट through advertisement and all this. So this dimension also can be used in concluding part. वो भी इनसे इंस्पायर होकर उन्होंने ये डायमेंशन दिया था. Critically examine Hannah Arendt conceptual triad of labor, work and action. Hannah Arendt was a profound and original thinker of 20th century whose view are often described as thinking without barriers. Okay.
सी ऑफर्स से देखो आपके इंट्रोडक्शन अच्छे जा रहे हैं, वेरी गुड, और आपके आंसर्स के अंदर अच्छा फ्लो है, लाइक प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज सही तरीके से, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। और अब यू आर अकोमोडेटिंग आर्गूमेंट्स प्रॉपरली, तो ऐसा कुछ मेजर कोई इशू नहीं है, नाउ थिंग्स आर गोइंग फाइन। सी ऑफर्स ए डिस्टिंक्टिव and humanist perspective of political with her conceptual triad. She notes that vita contemplativa and vita activa are not hierarchically superior or inferior but hold distinct purposes in human life. In her theory of action, the first component is labor, consisting biological, reproductive, and material phase. Labor is cyclical, uh, never ending, and a process marked by utility. In ancient times, labor was seen as the disgraceful, but now it define everyone. Means it, see, all these three, labor and work and action, both are necessary, all are necessary और all are interrelated. तो ये डायमेंशन में लिखना है, ऐसा नहीं कि ये सुपीरियर और इन्फीरियर की बात नहीं है, पर दे आर नेसेसरी, लेकिन सिग्निफिकेंस वो बाद में एक्शन को देगी. सेकेंड कंपोनेंट इज वर्क, creative and social. It transforms raw material to tools or artifact that shape the world. It shows freedom and human sovereignty, eventually contributing to political phase. हाँ, so ये this is also one of the important component कि भाई you have to work, you have to uh, create something, you have to get in indulge in some kind of commercial activity. So this is also necessary, and again it is also, it is related to sustenance. You have to sustain, okay, and you have to use your creative faculties. However, true essence of work is become a bridge between survival and politics, else work divorced from the politics and public deliberations can become a hierarchical structure, okay. Highest human activity is action realized through the speech and deliberation in public sphere. It reveals unique identity, very good. It reveals unique identity, initiate novelty, this defined by freedom, plurality and unpredictability. Unique identity, इसमें ये डायमेंशन भी होती है दैट द पर्सन हु इज गोइंग टू गेट इंडल्ज इन एक्शन, उनको दे हैव टू कम इन टू द पब्लिक स्पीयर. They must not confine themselves in the wall of their home. They have to come to the the public sphere. Then it's count the that you are committing some kind of action. When you are saying unique identity, you are reflecting, you are showing your identity. आप सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हो अपने ड्राइंग रूम में बैठ के, यू आर एक्टिवली पार्टिसिपेशन. यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात है यहाँ पे, ओके. सो व्हेन यू टेक पार्टिसिपेशन एक्टिवली, then you are part of that particular what we call political process. तो इसका एसेंस यही था, जब जूस के ऊपर एट्रोसिटीज हो रही थी तो लोग, जो जर्मन लोग थे बहुत सारे, they were also pained and they wanted to help but they couldn't do it because of fearing of their own life. So ये डायमेंशन थी कि भाई तभी माना जाएगा that you really wanted to help when you come out in open and then you try to speak your mind. ऐसे नहीं कि घर में बैठे हो सोच रहे हो सोफा के ऊपर बैठ के that oh I should also do this thing, मुझे वोट करना चाहिए, but you are not participating in the political affairs. So action means you have to come out, you have to come out in the open, you have to reflect your views, you have to take active participation. और इस डायमेंशन को आप एक्सपेंड करोगे और हम इसको वी आर गोइंग टू लिंक दिस विद डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी एज वेल. फाइन, ये डायमेंशन आपको और एक्सपेंड करनी है इस आंसर के अंदर. आई थिंक इट वाज 20 मार्कर. सो ये चीज़ थोड़ी सी थी इस आंसर के अंदर. यू नीड टू एक्सपेंड दिस, ब्रिंग ऑल दोज डायमेंशन, एंड देन if it is applicable in the contemporary times, link and then conclude. तो ठीक है, ओवरऑल यू आर राइटिंग गुड. अभी सिर्फ हमको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स हो तो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, कंटेंट को इनरीच करते जाना है, एंड जस्ट कीप रिवाइजिंग. सो जब आंसर लिख रहे हो तो फटाफट दिमाग में पॉइंट्स आए एंड देन वी कैन राइट. बस वही है, मेजर कोई इशू नहीं है स्ट्रक्चर का, इंट्रोडक्शन का, कंक्लूजन का, नो, एवरीथिंग इज़ फाइन.
सिर्फ कंटेंट थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते जाना है, और बस ऐसे होता है. आई टोल्ड यू, अगर 20 मतलब 19 क्वेश्चन है, सो 5 से 6 क्वेश्चन बहुत अच्छे निकल जाएंगे अपने. वी ऑलरेडी वुड बी हैविंग दैट मच कंटेंट हमारे पास पहले से होगा, क्योंकि हमने PYQs किए हुए हैं. सो दैट इज़ गुड थिंग. सेकेंड थिंग इज कि ये लगा लो 7 से 8 क्वेश्चन हमारे एवरेज भी हो गए, इट्स फाइन. और 4-5 अगर थोड़े से बिलो एवरेज भी गए तो सब कुछ मैनेज हो जाता है. सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. बेसिक कंटेंट ठीक जा रहा है आपका, फ्लो वगैरह सब कुछ ठीक है, इंट्रो कंक्लूजन ठीक है. सिर्फ कंटेंट पे हमको थोड़ा थोड़ा फोकस करते रहना है. कीप रिवाइजिंग, एवरीथिंग इज गोइंग गुड. ओके, आई अप्रिशिएट योर कंसिस्टेंसी, and I also appreciate the way you are improving. Very good.